be your host for today's session. And I welcome and thank you to all on behalf of NADA India Foundation who have joined the session. Before we start, let's have a quick introduction about World TB Day. Each year, we commemorate World TB Day on 24th March to raise public awareness about the devastating health, social, and economic consequences of tuberculosis and step up the effort to end the global TB. Today, NADA India Foundation is celebrating World TB Day with the theme Increase Tobacco Taxes to End TB, Save Life. Tuberculosis and tobacco use are two major health challenges that independently cause considerable health and economic burden in our country. With serious socio-economic implications, India is the second largest consumer of tobacco product in the world, with as many 35% adult consuming tobacco. Also, India has highest burden of TB globally with an estimated of around 2.8 million incident cases being registered per year. Since there are direct relationship between TB and tobacco epidemics, one major way to stop the consumption of tobacco will be to increase the taxation so that the consumption can be reduced. So now, without any further ado, we will begin the session by inviting the chairperson of NADA India Foundation, Mr. Sunil Vatsyan, for welcoming the session. Uh, Thank you very much, NYN members and all those who have joined us today's important event, that is World Tuberculosis Day, which has its own social implications and ramifications. And certainly, tobacco is one of the causative as well as the risk factor of non-communicable disease, as well as the TB as a which has its own correlation. And we have a reason to commemorate this day, special day, because tobacco tax increase is one of the major or the kind of method, like a way we are looking forward to have something to do with the how we can increase by advocating for increasing the tobacco tax. We can certainly take care of uh, the investment which is needed to combat and to take care of the tuberculosis in India, because we have committed, government of India has already committed themselves to end tuberculosis in India by 2025. So that is like is something, a big challenge for all of us to work on it. And this is so I really welcome on behalf of NADA India as well as NYN, NADA Young Indian Network for Good Health, and the guest speakers we have Dr. Gurmeet Katoj, who is NTCP officer in District Kangra, and he is a young dynamic professional in the health sector. And second, Dr. Ambreen Jamali, who is a professor in the Central University of Himachal Pradesh. And they have been like our partners as well as teachers for, we have been like working all in like in partnership with the Central University for many years. I also welcome Sanjay Sharma ji, who is a retired Deputy Director from Youth and Sports Ministry of Himachal Pradesh. And especially I will mention the two young people. One is Dr. Ridhima and Sarabjit, who have been like, who found the courage to talk about their experience and in the field as well as in their own personal life with tuberculosis, because we call them the people living with tuberculosis, means the kind of
challenges and issues which they have come across, and how they themselves rededicate themselves to work with the people who are suffering from either tuberculosis, or those who are like working with on the issues related with the tobacco tax in Punjab and in Haryana, and as a health group. I welcome you all, and we look forward to have more as an input, the output of the whole webinar in a form of your deliberations and recommendations, which we can take it further. I again welcome you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Now we will proceed with the theme introduction. And for that, I would like to call Mr. Mangalji. Before that, I would give a brief introduction about Mr. Mangal. He is the NADA India State Coordinator of Punjab and Himachal. He has more than 11 years of experience in social activism. He is tirelessly working with youth for well-being and tobacco control. Mr. Mangalji, please come forward. धन्यवाद रिधिमा, मोनिका, धन्यवाद आपका। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करने के साथ, रोकथाम करने के साथ तथा लोगों के जीवन पर इसका जो खतरनाक प्रभाव है उसे रोकने के लिए हर साल इसे 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में अन्य तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उन्हीं आयोजनों में एक कार्यक्रम आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो कि तंबाकू से हो रहे हार्म और तंबाकू से हो रहे उत्पादों से हो रहे जो नुकसान है उसके बारे में हम अपने यंग डायनामिक गेस्ट स्पीकर्स के माध्यम से आप लोगों के बीच रखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ टीवी प्रोग्राम के बारे में कि क्यों ये कब कैसे क्यों मनाया जाता है। हालांकि 2000 से लेकर अब तक दुनिया भर में कोविड जैसे समय में ऐसे कार्यक्रमों की वजह से 66 मिलियन लोगों की जान बची है। जब टीबी के बारे में जानकारी नहीं थी तो बहुत सारा नुकसान प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सामाजिक गतिविधियों को हार्म करता था। इसके साथ कुछ टीबी डे के इतिहास के बारे में हम बात करें। 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोच ने टीबी के एक बैक्टीरिया को खोज कर निकाला था, जो कि उनकी बचाव के लिए पूरे विश्व में कामयाब रहा और सन 1905 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये एक छोटी सी शुरुआत थी, परंतु आज एक छोटा सा हम बात करें टबैको के बारे में, टबैको टैक्सेस के बारे में। टबैको एक मुख्य कारण है टीबी के, जिसके कारण लाखों लोग अपनी जान से हाथ गंवा रहे हैं। हम जैसे युवा, हम जैसे डायनामिक, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर जुड़े हैं, डायनामिक लोग जुड़े हैं, उन डायनामिक लोगों की वजह से हम जागरूक करने में कामयाब हो जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे बीच डॉक्टर गुरमीत कर, जो प्रोग्राम नोडल ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, एक बहुत ही प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं और इनके जो कार्यक्रम हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को काफ़ी ऊपर ले जाने में तत्पर रहे हैं। इन्होंने तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को विश्व पर्यटन के मैप पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाया है और उन्होंने काफ़ी कार्यक्रम आयोजन करे हैं। इनके साथ डॉक्टर अमरीन जमाल, जो कि एक डायनामिक महिला होने के नाते लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में पायनियर भी हैं सोशल वर्क फील्ड के, और 200 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को अलग अलग जगह पे अपॉइंट करने में वो कामयाब हुए हैं। इनके साथ हमारे बीच एक बहुत गणमान्य, जब पिछले महीने जब हमने उनसे संपर्क करा तो हमें पता चला कि वो अपनी कुर्सी से रिटायर हो चुके हैं, परंतु उनका जो जज्बा है, जब मेरे कॉल कर हमारे पूरे नाडा इंडिया फाउंडेशन का एक कॉल करने पर मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ श्री संजय शर्मा जी का। 35 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने हिमाचल के चप्पे चप्पे, हिमाचल के कोने कोने में अपनी छाप बखेरी है और आज भी वो अपनी प्रतिभाशाली कार्यों के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि भारत के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे देशों का भ्रमण भी किया है और नेतृत्व भी किया है। आज वो हमारे बीच अपनी बातों के माध्यम से कैसे हम युवाओं को तंबाकू के साथ उन्मूलन कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं, उसके बीच अपनी जानकारी रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू मंगल जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी सरबजीत जी और डॉक्टर रिद्धिमा को, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी हमसे एज अ केयर गिवर, जिन्होंने टीबी पेशेंट की देखभाल की है। हेलो, गुड आफ्टरनून जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक जी? हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ आ रही है बिल्कुल। ये सरबजीत। गुड आफ्टरनून सर। मैं यहाँ पे जून जुलाई से नाडा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ी हुई हूँ। पटियाला पंजाब से हूँ। जैसे तंबाकू पे हम काम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 साल सर्वे किया है। वहाँ पे हम टीबी पेशेंट जो निकालते थे ना, जाके स्लम एरिया होते थे, वहाँ पे तंबाकू भी बहुत यूजफुल होती थी। कहीं 4 बैठे हैं, कहीं 2 बैठे हैं, कहीं 6 बैठे हैं, इतना स्मोक होता था। वहाँ पे ज़्यादा केस टीबी के निकलते थे। कई बार तो जैसे एक पेशेंट स्मोक ले रहा है, उसको टीबी हो जाती है, और वो टीबी फैलने वाली बीमारी है। एक घर में, एक परिवार में एक मेंबर को टीबी होती है, तो वो दूसरों को भी टीबी कर देता है। एक छत के नीचे 4 जी होते हैं, तो वो दूसरों को भी टीबी कर देता है। जो स्मोक नहीं ले रहे हैं, उसकी भरपाई, उसका नुकसान उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को भी भरना पड़ता है जो नहीं स्मोक ले रहे हैं। जो स्मोक करने वाला बंदा होता है, उसकी वजह से सिर्फ स्मोक के इतने नुकसान हो रहे हैं। जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको, जैसे जो टीबी पेशेंट, जो स्मोक लेता है बंदा, उनको 4 से 5 गुना ज़्यादा टीबी बढ़ने के चांसेस होते हैं। जो नहीं स्मोक लेता है वो तो टीबी की मेडिसिन खा के ठीक भी हो जाता है, मगर जो स्मोक लेता है उसके बहुत कम चांसेस बचने के होते हैं। टीबी की मेडिसिन लेने के बाद भी वो बंदा बच नहीं पाता है। 2 महीने की टीबी की मेडिसिन 4 FDC लेने के बाद जब उसका दोबारा फिर स्पुटम टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोप, तो भी वो बंदा पॉजिटिव पाया जाता है। दोबारा से फिर उसकी टीबी की मेडिसिन 6 महीने की पूरी करनी पड़ती है। इतने नुकसान हो रहे हैं। कई कई बार तो 1 साल के बच्चे को भी टीबी पॉजिटिव निकल आता है, सिर्फ स्मोक की वजह से। 1 साल के बच्चे ने तो कोई स्मोक नहीं लिया ना, उसने तो कोई नशा नहीं किया, तो भी वो टीबी पॉजिटिव निकल आता है, सिर्फ स्मोक की वजह से। पता नहीं हमारी सरकार क्या कर रही है। टीबी, अगर इस पे स्मोक पे थोड़ा जा टैक्स बढ़ा दिया जाए तो 1000 लोगों की जिंदगी बच सकती है। इसलिए स्मोक पे थोड़ा टैक्स बढ़ाना चाहिए। टीबी के इतने केसेस आते हैं, 4-5 लाख के आसपास हर साल लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोरोना की महामारी में जैसे सबसे ज्यादा मृत्यु गरीब लोगों की हुई है। वो इसलिए क्योंकि वो स्मोक लेते थे। स्मोक लेने के कारण जैसे उनको टीबी हो जाती है और इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इसमें। अगर थोड़ा सा इस पे टैक्स बढ़ा दिया जाए सरकार ने, तो लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है हर साल। ठीक है सरबजीत। अभी वो रिद्धिमा बात करेंगे, आप आगे जाइए। थैंक यू सर। आप सभी को डॉक्टर रिद्धिमा कमर का नमस्कार। मैं तकरीबन 1 साल से नारा इंडिया फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, और आज मैं सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया गया है। आज मैं किसी चिकित्सक, किसी डॉक्टर के रूप में आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं एक पुत्री, एक डॉटर की तरह आप सभी से मुखातिब हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि तकरीबन 2 साल पहले जब कोविड महामारी का पहला ही वेव हमारे रूबरू आया था, और शायद हम सभी कोविड महामारी से उलझ रहे थे। मेरे परिवार के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय कोविड नहीं था। आप सभी को आश्चर्य होगा कि जब कोविड महामारी से सभी लड़ रहे हैं तो हम कोविड से चिंतित क्यों नहीं थे, क्योंकि उसी समय मेरी माँ डायग्नोस हुई थी स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस से, और हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस लेवल एक केयर गिवर की तरीके से कोई भी नहीं समझ पा रहा था। हर संघर्ष के 2 पहलू होते हैं। हर संघर्ष हम एक तरीके से एक मरीज के संघर्ष को देखते हैं कि एक मरीज
पीड़ित है, दर्द में है, दुखी है, परंतु एक देखभाल करता की पीड़ा को ना कोई समझने की कोशिश करता है, ना समाज उसको एड्रेस करता है। अगर एक मरीज पीड़ित है तो लोग समझते हैं कि हाँ वो दर्द में है, लेकिन वो उसका परिवार, पूरा परिवार अवसाद से जुड़ा होता है, उसका दर्द कोई भी नहीं समझ पाता। हम सिर्फ मानसिक तनाव नहीं झेलते। अगर आपके घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, इफ देयर इज समवन इन अराउंड यू हु इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, आप सिर्फ मानसिक तनाव नहीं झेलते, आप शारीरिक तनाव झेलते हैं, एक तरह का आप सामाजिक तनाव भी झेलते हैं। कई तरह की स्टिग्मा जुड़े होते हैं, कई तरह के मिथ्स जुड़े होते हैं। लोग आपको हे दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा इसके घर में एक टीबी का पेशेंट है, तो अरे ये भी तो टीबी का पेशेंट होगा। कई तरह के तनाव, कई तरह के अवसाद की जड़, कभी कभार लोगों का सही मार्गदर्शन नहीं होना होता है। हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे शायद मुझे भी लग सकता था कि चलो तंबाकू का सहारा ले लेते हैं। कई लोग लेते हैं, कई लोग सोचते हैं कि तंबाकू का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाएगा, हमारा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन क्या ये समाधान है? एक ट्यूबरकुलोसिस, मैं ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट की बात नहीं करूंगी। बीइंग अ डॉक्टर आई कैन कॉल हर अ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, बट फॉर मी शी वाज माय मॉम। तो यदि आप संघर्षों की बात करते हैं तो संघर्षों के कई पहलू हो सकते हैं, परंतु हिम्मत रखना, हिम्मत बनाए रखना, ये हमारे हाथ में होता है। हिम्मत से सिर्फ आप अपने मरीज का ध्यान नहीं रखते, आपने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते, हिम्मत से आप अपना भी ध्यान रखते हैं। तो मेरी इस युवा पीढ़ी से यही अनुरोध है, निवेदन है कि चाहे संघर्ष हो, आप देखभालकर्ता के तौर पे आपका जीवन बहुत ही संघर्षरत होता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आप तंबाकू की तरफ अपना राह मोड़े। नहीं, आप लड़ भी सकते हैं। और हाँ, सरबजीत जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप तंबाकू तपेदिक के मरीजों से इतनी करीब तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने तो शायद सिर्फ एक मरीज देखा है, आपने तो न जाने कितने मरीज देखे होंगे। तो मैं बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, ये कह के सभी से अनुरोध है कि चाहे जीवन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम लड़ सकते हैं। तंबाकू की तरफ मुड़ना कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और हाँ, यहाँ मौजूद जितने लोग किसी भी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को, किसी भी तपेदिक के मरीज को जानते हैं, पहचानते हैं, तो बस उनसे अनुरोध है कि किसी तरह का स्टिग्मा अपने दिल में ना पाले, उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। और अब तो ट्यूबरकुलोसिस की इतनी दवाइयां मौजूद है, उसका इलाज मौजूद है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। जरूरी है कि हम जो मिथ्स जानते हैं उसके प्रति हम जागरूक हों और जो सच्चाई है उससे एक दूसरे को सामना करवाएं। तो बस एक पुत्री का आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरबजीत जी और डॉक्टर रिद्धिमा, हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत ही करेज चाहिए होता है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ शेयर कर पाना इस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए। ह्यूज रिस्पेक्ट, थैंक यू। 8% of TB cases can be attributed to tobacco uses. Moreover, tobacco uses among TB patients is on the rise. In the year of 2019, the report said out of all TB patients, 4% were found to be tobacco users. And now the number has gone up to 14%. These numbers does not indicate a good sign. Now, I would like to invite our first speaker, Dr. Gurmeet Kato. He is NTCP officer in District Kangra. He is young dynamic professional in the health sector. During the tobacco control program in District Kangra,
he achieved milestone to improve and prohibit tobacco in rural and urban community. Also, through cluster awareness program regarding the harms of tobacco. Welcome, Dr. Gurmeet. डॉक्टर गुरमीत, आपकी आवाज हमें नहीं आ पा रही है. Monica, please share the PPT. Just give me 1 minute. I am audible? Yes, sir. Yes. So just give me 1 minute to share my screen. Hello, I am audible? Yes, sir, you are audible. Second. Thank you, NADA Foundation, for inviting me for this session. My name is Dr. Gurmeet Katoj. Presently, I am working as a district program officer in district Kangra. I am looking all non-communicable disease, including National Tobacco Control Program. Please, can you share the screen? Yes, sir. Just give me 1 minute. I'm sharing the screen. It's not visible presentation. So just give me 1 minute. No problem, please. सर अब विजिबल है? Can you do the slide view? Yeah. Yeah. So good afternoon, everybody. Today is the World TB Day, Tobacco Day, and the theme for this is Invest to End TB and Save Lives. As you know, the TB is the most leading causes of death globally. So I'll start my presentation with relation to tuberculosis and tobacco use. Next, please. As far as smokers are concerned, the tuberculosis, the previous speakers, they told about the cause of tuberculosis.
as this is being spread by the mycobacterium. I'll just briefly speak because previous speakers already spoke on this. So the tuberculosis is the major public health challenge, which can be prevented. And if somebody with the TB, he smokes, he puts his family and the second-hand smoker, all the people who are sitting nearby, he's putting all of them into the risk of spreading TB to them. And this it is strongly associated with the relapsed TB, like latent TB. Latent TB, India is at high risk of latent tuberculosis. I'll explain. There can be a mycobacterium in the body, but it can't make you sick. That is called the latent TB. And by this, the tuberculosis and tobacco use can it's like a considerably health and economical burden to the country, and it gives us many implications, social implications. Next, please. The global burden, over 95% of the deaths it occur due to TB. 95% of the deaths it occur in the lower middle income countries. India is also in low middle income countries, and it remains in the top 5 causes of the death in the world, mainly in the women and 15 to 44 years of the age. And the tobacco use is it is preventable cause of disease and death in the world. If we see worldwide, 6 million deaths deaths are due to tobacco use, and 0.6 million deaths due to second-hand smoke. Second-hand smoke, I think so. Everybody knows about the second-hand smoke. One is the smoker, and the people who doesn't smoke and sits around him, and he inhales the smoke, tobacco smoke. Those are that is the second-hand smoke, and around 8 million deaths. It will cause around 8 million deaths by the year 2030. Next, please. Now the burden in India, like we have India is contributing in tuberculosis. We are having the largest number of TB cases in the world. It is estimated around about 2.8 million per annum, and simultaneously we are the third largest producer of the tobacco products like tobacco, and around 1 million 1 million Indians die due to tobacco usage and the disease caused by this tobacco. Next, please. Like key findings, in the key findings, like we have global adult tobacco survey. It says that in to 75 million are the tobacco users in India. Like 1/3, every 35% of the adults they smoke, and smokeless tobacco. Smokeless tobacco is more prevalent in India, and the prevalence of tobacco is higher in the rural areas as compared to the urban areas. Next, please. If we see the GATS survey from GATS 1 to GATS 2, these are the rankings of the different states. As far as if I talk, there is one arrow, and the lowest rate is in Goa, that is 9 in GATS 1, and in GATS 2 it's 9.7, and the highest is in Mizoram in GATS 1, and in GATS 2 it's in Tripura 64.5%, and like Himachal Pradesh, if we see, it was 21% previously, and now in GATS 2 it's 16.1%. Like there is a decline of 4.9, which is a very good and handsome number. Next, please. We have evidence of TB tobacco comorbidity. Almost 40% of the deaths are associated with the use with the tobacco use, and the prevalence of tuberculosis is 3 times higher among the smokers. Like smokers are more prone to get the TB disease to all those who never smokes.
and the mortality from TB is the mortality from TB is 3-4 times higher among ever smokers as compared to never smokers. So we can see the figures from the various documents and research that TB and the tobacco users are more prone to the disease, and mortality is higher. And smoking contributes around about to 50% male deaths, and that too from the age of 20 to 69 years of the age group. Like 25 plus is the uh, most productive age which can contribute for the family, for the nation, and all. And the exposure to the tobacco smoke has been found to affect TB. It is a risk to develop tuberculosis, early effects, and the clinical manifestations, risk of relapse among the TB patients. Like the patient, they have completed the treatment, but there is a risk of relapse, and which I spoke earlier also, that regarding the latent TB, and um, it can increase the mortality also. Next, please. Like there are the risks of smoking for the people with TB. There are severity of young TB symptomatics. Smoking can worsen your TB symptoms, drug resistance. Like if patient has completed the treatment and treating, there can be a relapse. And the drug response. Smoking can adversely affect the drug response and can increase the probability of recurrent TB, and uh, raises raises the chances of dying more from the tuberculosis. Next, please. Like briefly, I'll tell you regarding the revised National Tuberculosis Program. It was, but now it is called National Tuberculosis Elimination Program. There is a national level team which is governed by the CTD, then state level team. There are state TB officers, district level. There is a district TB officers, and at sub district level there are TB units, and at peripheral health institutions we have the PHIs. Next, please. This is brief about the National Tobacco Control Program. It was launched in 2007 and 8, and at the initial stages, it was piloted in few of the districts of Himachal Pradesh. But later on, now it is being run in whole of the India, in all the districts. Around about we have 625 districts in the India, so it is being run in all the districts. We have National Tobacco Control Cell at the national level, and there is a State Tobacco Control Cell at a state level. There we have state nodal officer, state consultant, and legal consultant, and there is a district TB unit, district tobacco control program, district tobacco control cell. There is a district nodal officer, district consultant, social worker, and there's a counselor also. Next, please. Like we can see, there are many efforts are being done to control and to eliminate the TB by 2025 from the India, and the World Health Organization is like is saying that by tuberculosis will be epidemic by 2030, but India is trying to eliminate the TB by 2025, and we can all those risk factors who are contributing it, like tobacco is one of them. So we have to reduce the tobacco consumption, and which can contribute contribute in spreading of this TB, and we can curtail the mortality. We can reduce the mortality also and morbidity also. Next, please. Like these are the things from the outlook cutting. Like we have some of the from tobacco use. When we smoke tobacco, there are some chemicals, and chemicals which can harm the lungs and which can contribute to the tuberculosis, and that can there will be the drug response for the particular patient that can be that can be slowed down by the usage of tobacco, and and the smoking increase. There can be the risk of disability, death,
it can cause. Next, please. That different organization they're contributing for this elimination of TB and TB tobacco collaborative activities at the national level, state levels. They are being organized at state level, district level, and from the at the PHI levels. Next, please. Like there is one from the World Health Organization also, that smoking and tuberculosis is a dangerous combinations. We have some articles on the newspaper also. Next, please. Next, please. Uh, we have some national tobacco quit services. We have toll-free numbers 18001 112356. This is a toll-free number, and you can give a missed call on this 011-229-01701. And there is a if you find any violation for smoking laws, there is a toll-free number. And in our state, we have state medical helpline, that is 104. We have clinical psychologists. If somebody wants some help, telephonic help and one-to-one help, they can call on this toll-free number and can get the benefits. We have one tobacco cessation center at Zonal Hospital, Dharamshala. Next, please. Thank you. Thank you, Dr. Gurmeet, for the insights and enlightening us with all the information. It's our pleasure to have you here. If anyone has any questions, feel free to ask, please. Okay. Sir, I have a question. Sir, why TB and tobacco cases are higher in a rural area as compared to the urban area? Pardon, please. So, in your slide, there you stated that TB and tobacco cases are higher in rural area as compared to urban area. Why is that, sir? How can we? It can be. This all is from we have found this from NFHS and GATS survey, and because more of the people they use chewable tobacco in the rural areas, and they also choose BD for smoking, which is like the cost is less, and most of the population in India, it's a rural population as compared to the urban population. We have more of a rural population in the India and in Himachal also. Okay, thank you, sir. As the denominator will be high, so the number will be. Okay. 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 So now, more than 20% of global tuberculosis incidence is attributed to smoking, and it doubles the risk of the disease. India alone accounted for 27% of the world total TB cases. So now I request our second speaker, Dr. Ambreen Jamali, brilliant scholar and assistant professor, Department of Social Work in Central University of Himachal Pradesh. Under her surveillance, more than 200 professionals have been successfully trained, now all working in various sectors of social work. She is also a pioneer in creating professional social workers in Himachal. Welcome, Dr. Ambreen. Thank you, Ms. Monica. Hope my voice is audible to everyone. Yes, ma'am. A very pleasant good evening to all the eminent speakers over here, the organizers and the convener. I express my gratitude to Mr. Sunil Vatsanya ji, with whom collaboration we are being continuously working hard, particularly in Himachal Pradesh, and now we can say that at national level,
We are in collaboration working hard to eradicate this menace, this problem of drugs or alcoholism, or a tobacco-free, a system to have a tobacco-free nation. And moreover, now I'm very glad that you are now keeping a critical view on this tuberculosis also. So thank you everyone. Thank you the organizers and convener for inviting me. So I'll not because the young peoples are joining with me, and I can see that many young peoples are there. So I'll be like in a more blended form. I'll just share that what is the I'll try to have the sensitivity towards the issue, that why today we all are celebrating this World Tuberculosis Day, and when this we are celebrating this World Tuberculosis Day, how important it is to ensure that this tobacco, this smoking, the other forms of the drugs or the system which is there, how they are being integrated and how we have to fight for it. Since I'm a social worker, so we don't limit just only discussing that what is the prevailing situation. Rather, I'll also try to give you what are the preventive measures or what could be the curative measures to deal with this problem. So starting with my theme of dealing with this issue, I just want to give you a bit data so that we can have the bit awareness and sensitivity towards the issue. Let me say, World Health Organizations aims to end this tuberculosis by 2030. That is a well-known fact. Everyone must be knowing that. But we are very Indians are the worst who are being affected badly with this communicable disease, we can say. And we try to establish a system where we can eradicate tuberculosis. The government of India has taken an initiative and has planned to eradicate the tuberculosis by 2025. So we are still 3 years ago, but let's see how efficiently these initiatives will help us to get to achieve the goal which is being set. We cannot ignore that it is not only the tobacco. There are many other, I can say the other factors like poverty, malnourishment, the ignorance, the unawareness in India, which is leading to at least 12%. India is being considered as the 12% of the world tobacco users, and that may be also one of the undermining factors that why we are dealing with the burdens of tuberculosis. In the recent phenomena, मतलब अभी हाल फिलहाल में अगर हम 1-2 साल की ही बात करते हैं तो global health crisis was being declared because of the pandemic and because of the COVID-19. So we were dealing with the global health crisis of this century, I can say. But in that period also, we somehow escaped that the ancient infectious disease, tuberculosis, were being steadily killing humans for centuries. In 2019, alone 10 million people died because of tuberculosis. And 1.4 million people died because of tuberculosis, among whom in India we were having the largest cases in India, in whole of the world. Before COVID-19, TB was killing more. It was because we got another pandemic, we got another infectious disease of COVID-19. So we can have the comparison in that sense. But still, I can say that the latest index of 2020 reveals that total 7,163 TB cases were reported during 2020. So that means that 2.2 cases per lakh person. So India it's a country with nearly 1.23 billion people, representing 7.5% of the world population is in India, but it has largest number of the cases in the world, with an incidence rate of 217 per lakh per year. That is the data of 2015. We can say that we are working hard, we are creating awareness, there are many programs, there are many policies which are working, and that is the only reason that we can quote that we were being able to achieve 74% of the treatment success in the treatment cases and the relapse management. And we all know that the relapse of the tuberculosis is very critical. We have to be very cautious over it. Let me just share that the Global Adult Tobacco Survey, GATS, revealed that more than 1/3, that is 3.5% of adults in India, are tobacco users. See,
it's not only that tobacco users are, as abhi Gurmeet ji ne bhi share kiya, it is not only that those who are smoking and those who are using tobacco, they are harming themselves. Otherwise, on the other hand, they are spreading it to the other who is sitting, the children who are living with their families, the persons who are not directly but somehow affected with that communicable disease. Smokeless tobacco is much more prevalent. The women are so-called, we always quote that women are the one who are like not into any other any such kinds of the habits of eating tobacco, drinking, or chewing tobacco or smoking. But the surveys reveal that women are more using chewing tobaccos, and they are also harming their health. 8%, if we directly relate in the terms of the data, then we can clearly justify, we have a clear evidence of saying that 8% of the tobacco users are getting tuberculosis. In 2019, 4% tobacco users were having tuberculosis, and presently 14%. There is an increase. The question raised by you, that why in the rural area, मतलब वहाँ है कि people are not adapting. हम हमेशा कहते हैं drinking का effect इंडिया में या हमें क्यों sensitize करना है? Western countries तो ज्यादा drink करती है, they are more drinking, but they have a habit of drinking, but they are ensuring the quantity and the quality. We are not into that. बीड़ी आराम से मिल रही है, किस क्वालिटी की है, कितना लेना है, चेन स्मोकर्स है, वो, that all things are going to be hampering the person's health. And it's not only hampering the person's health, rather it is being considered as a disaster. Financially burden है, family का burden आ रहा है, लोग जो अपनी डिजीज के साथ जो सेव करते हैं वो भी खत्म कर दे रहे हैं डिजीज में इलाज करने के लिए. तो ये सारे जो इश्यूज हमें है, ये हमें लोगों को सिर्फ यही नहीं कहना है कि टोबैको छोड़ दो, टोबैको से tuberculosis होगी. Rather, we have to sensitize them enough that it is you who are going to be the loser at the end. You, not only you, your family, your dependents, your monetary, your income, your everything is going to be devastated, finished, vanished. So we cannot ignore कि government of India ने target रखा है कि by 2025 will be able to deal with the problem of tuberculosis. But again, we need to plan it in a more systematic way. I'm very glad that you people are organizing such kinds of events, and that message should be reached not only to the elite class or the persons who are being educated, rather to the grassroots people, the targeted beneficiaries who exactly requires the interventions, the people who are living in the rural areas, the labor class who are working, and they are ignorant about what is being going into the world because they are busy in earning their daily bread. That is their only reason, है ना? 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बाकी जिंदगी के लिए उनकी कोई अहमियत ही नहीं है. वो सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं खराब कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली, अपनी जो अर्न कर रहे हैं वो भी खत्म कर दे रहे हैं. We should be very thankful to कोटपा एक्ट also, जो एटलीस्ट अब मूवीज से पहले या टीवी एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में या सिगरेट पैकेजिंग के फॉर्म में एक सेंसिटाइज मैसेज आ रहा है, एक अवेयरनेस जनरेशन का मैसेज आ रहा है. जो लोग पढ़ नहीं सकते, जो हम जैसे यहाँ बात कर रहे हैं वो सुन नहीं सकते, कम से कम वो देखकर कुछ ना कहीं उनके अंदर वो सेंसिटिविटी पैदा हो उस चीज को लेते हुए. आई शुड से कि अभी मुझे जैसे सुबह बात हो रही थी आपकी टीम से, तो इट वाज बीइंग लाइक के व्हाई देयर शुड नॉट बी इंक्रीज इन द टैक्सेस पे इंक्रीज होना चाहिए. तो आई जस्ट फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. इट वाज अ गुड आइडिया, ऑल्दो द यूक्रेन गवर्नमेंट ने इसे प्रूफ भी किया है. यूक्रेन ratified the WHO convention in 2017 and the parliament of Ukraine adopted a policy to increase the taxes on the tobacco. They were having like
इससे इंक्रीज करके इसका कंजम्पशन को कहीं ना कहीं कम कर देंगे, और उन्होंने प्रूफ भी किया देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द स्मोकिंग एंड देयर वाज इंक्रीज इन द प्रेवलेंस इन द लास्ट फ्यू इयर्स. वी कैन से एविडेंस शोज कि इंक्रीज सक्सेस से होता है, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, व्हाट आई फील इज कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. हमने ड्राई स्टेट्स बना दिए, बिहार इज अ ड्राई स्टेट, गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, अल्कोहल नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या खत्म हो गया? वी ऑल नो द रियलिटी, है ना, खत्म नहीं हुआ. जो देसी शराब के फॉर्म में आ रही है, जो पॉइजन का काम कर रही है, उसका प्रेवलेंस बढ़ गया. तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग और रादर देन प्लानिंग, मतलब ठीक है, वी शुड प्लान, वी शुड डू, बट वी नीड टू हैव अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ द पीपल्स विद whom we are dealing. We need to promote awareness among the people. We need to sensitize the people who are the end users, and we need to explain to them that what exactly it is going to harm you. Because I was been giving like 15 minutes to conclude, so I hope I have not taken much of your time. To conclude, I'll just say that while reading through the data, while retrieving the data, I found 5 A's and 5 R's model. जिनको पता होगा that's very good, जिनको नहीं पता है तो as a part of the intervention I'll just want to give you from my side as quoted by WHO 5 A's मॉडल प्रिवेल करता है, जो उनके लिए है जो रेडी टू क्विट है. हम हमेशा कहते हैं कि देयर आर HS फॉरमैन ने 4 P's दिए हैं. अ पर्सन विद अ प्रॉब्लम्स कम टू अ प्लेस, है ना, टू डील विद द प्रोफेशन, है ना. तो वही है जो रेडी है क्विट करने के लिए, जो रेडी है अपने आप को बचाने के लिए, उसके लिए हम एक मॉडल डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं सबसे पहले आस्क. The social workers or the volunteers who are working with the team, who are dealing with the issue, they should ask the patient if what exactly she कितने टाइम से कर रहे हो, कब तक कर रहे हो, कब खत्म करना चाहते हो. Next is advise. You advise against the continuing of tobacco use and the condition or the ailment which he may suffer. Third is assess. Assess is readiness to quit by asking the patient whether he is ready to quit tobacco, है ना. Fourth is you assess them. Quit का plan बनाओ, facilitate करो, उसको help करो, assist करो. Finally, the 5th A is arrange. Arrange is plan up the follow up, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम दिक्कत में आ जाते हैं वो आते हैं रिलैप्स से. तो रिलैप्स को कैसे हमें ओवरकम करना है, वो हमारा अरेंजमेंट्स के थ्रू होता है, फॉलो अप स्ट्रैटेजी के थ्रू होता है. आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है, हम बातें करें और फिर उसके बाद इसको छोड़ दें तो वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी एंड, है ना. तो वी नीड टू हैव अ फॉलो अप सेशंस विद एवरीवन, और जब हम क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तब भी. सो दैट वाज द 5 ways फॉर द पर्सन हु आर रेडी टू क्विट, लाइक आस्क, एडवाइस, assess, assist and arrange. एंड ऑन दी अदर कैटेगरी हो जाते हैं हमारे वो लोग जो नॉट रेडी टू क्विट है, मुझसे होगा ही नहीं, आई डोंट वांट टू क्विट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये तो चला आ रहा है, दादी मासी एंड ऑल दे ऑल सेज कि हुक्का तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पीती आ रही है, बच्चा तुम क्या हमको बताने आ गए हो, है ना. तो उस सिचुएशन में हाउ टू डील विद दोस टाइप्स ऑफ द क्लाइंट इफ वी मेट. द फर्स्ट R स्टैंड फॉर relevance. If the tobacco user is not thinking about quitting the tobacco, then the doctors, the counselor, the treatment supporters, or the DOTS provider, they'll promote the awareness regarding to how relevant it is being required to quit the tobacco. The risk of continuing. The second R stands for risk. Risk for continuing. अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो क्या इफेक्ट होने वाला है, हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स के साथ क्या होने वाला है, चिल्ड्रंस के साथ क्या होने वाला है, अस्थमा, मतलब डिजीजेस, एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग. थर्ड आर इज रिवॉर्ड. दैट इज व्हाट रिवॉर्ड यू विल बी गेटिंग. अगर आपने छोड़ दिया तो यू विल बी एबल टू सेव द मनी, यू विल बी एंजॉयिंग द बेटर लाइफ, यू विल बी एबल टू relish the food and the smell and taste. Your all senses will work. What are the roadblocks? Fourth R is the roadblock. What are the roadblocks that you are facing? अगर आप प्लान करना भी चाह रहे हो तो क्या चैलेंजेस हैं जिसके साथ आपने डील करना है. अगेन a sort of the assistance, a facilitation is being required. And the 5th R stand for repetition. Repetition is the assessment of readiness to quit tobacco.
तो डॉट सेंटर्स में जो एक आपका सिस्टम चलता है ताकि रिपीट इंटरवेंशन हो, रिपीट आप फॉलो प्लान्स कर सको, और मतलब दैट इज हाउ यू कैन डील विद टू काइंड्स ऑफ द क्लाइंट व्हाइल डीलिंग विद दिस टोबैको एंड टू प्रिवेंट दिस ट्यूबरक्लोसिस टू प्रिवेंट दिस ट्यूबरक्लोसिस डिजीज। सो और जो आप शुरू में बात कर रहे थे स्टिग्मा की, सोसाइटल चीजों से जो हमारा एक सिस्टम है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के साथ है, उस चीजों को एक सोसाइटल कंसर्न में लेना, स्टिग्मा से कैसे रिमूव करना है, इस कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे एक मेन स्ट्रीम में लेके आना है, इसी के लिए हम सिग्निफिकेंट अदर्स की काउंसलिंग करते हैं या सोसाइटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्दो वी आर डीलिंग विद द एंड टू एंड यूजर्स, बट द अदर सिग्निफिकेंट अदर्स का जो रोल है दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। So I think I should end up over here because that's it from my side because the time was very less and ये topics ऐसे हैं जो जिसपे you don't have an end, and hope you enjoyed it. If you have any queries or anything to share, feel free. Thank you from my side. Thank you so much, ma'am. Thank you, Dr. Ambreen, for your remarkable observation on the topic. And we Thank you, ma'am. highly appreciate your guidance in this topic in detailed manner. And also thank you so much for uplifting the session with your presence. Thanks to the team. Yeah, thank you, ma'am. Now, there is a stigma that revolves around tuberculosis. Studies conducted on the socio-economic impact of TB have projected that over 3 lakh children are orphaned by the disease every year, while over 1 lakh women are rejected by their families once they contracted the disease. We as a society should be responsible to end the stigma and discrimination faced by the person with affected by TB through all stages of the continuum of care. Now, I would like to invite our third speaker, Sri Sanjay Sharma ji. He is a retired Deputy Director from Youth and Sports Ministry of Himachal Pradesh. He served more than 35 years in the field of improvement of youth engagement and various social activities that led Himachal on the globe. Last month, he retired from the service. Welcome, Sri Sanjay Sharma ji. Thank you, Team Nada. Am I audible? Yes, you. Thank you. सबसे पहले तो जो मुझे टॉपिक दिया गया या जिस बारे में मुझे बात करनी है, यूथ एंगेजमेंट। जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं या जितने भी सोशल इश्यूज हैं, बेसिकली यूथ जो भी हमारे इसमें प्रोग्राम्स चलते हैं, अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं या क्यूरेटिव प्रोग्राम्स हैं, उनमें यूथ एक पर्पस भी है और यूथ एक मीडियम भी है। क्योंकि यदि आपको सोसाइटी तक पहुंचना है, सोसाइटी तक डीप इंसाइट तक जाना है, तो यूथ एज ए मीडियम सबसे इफेक्टिव मीडियम जो है वो रहता है। पर्पज इसलिए है क्योंकि ऑल द डिजीजेस, ऑल द पेंडेमिक, ऑल द इश्यूज, ऑल द डेवलपमेंटल इश्यूज हैव यूथ स्टेक्स इन इट। सो सबसे पहले तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्या हम इन सारे प्रोग्राम्स में जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जैसा कि हमें everyone is aware, presently Young India की हम बात करते हैं, we have organizations and representatives with the brand name as well. 65 to 70% youth population हमारी जो है वो up to 35 years of age के बीच में आती है। इस एज ग्रुप में जब भी हम जाना चाहते हैं, जब भी इनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हमें अपने अब तक के एफर्ट्स को असेस करना पड़ेगा। जितने हमारे टोबैको, ड्रग अब्यूज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी हमारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, क्या हम कहीं भी आज तक इस सोसाइटी में अब तक यूज के क्वांटम को कम करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं? क्या जो मीडिया है, जो यूथ है, वो जितने भी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उनके साथ कन्विंस्ड हैं, और या यूथ ज़्यादा ल्यूरेटिव या ज़्यादा ल्यूक्रेटिव जो इनके इफेक्ट्स हैं उनकी तरफ जाता है? जिन चीज़ों को लिए हमें लगातार हम अपने आप में या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है वो एफर्ट करते हैं,
यूथ एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम युवाओं तक डायरेक्टली पहुँचें। यूथ के साथ डायरेक्टली पहुँचने के लिए बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ काम करती हैं। विलेज लेवल तक यंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम करती हैं, जिसके द्वारा हमें यूथ के बिहेवियरल चेंज की तरफ यदि हम जाएं तभी हम उन्हें एज ए मीडियम और एज ए पर्पस जो है वो उनके साथ काम कर पाएंगे। जितने भी हमारे बाकी के जो अभी बातचीत की गई स्टिग्मास के बारे में, जो सोशल स्टिग्मास हैं किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के साथ या किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के साथ हमेशा जुड़ते हैं। फील्ड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें सिर्फ यही बताते हैं कि जब तक हम सोसाइटी में जाके विद इन द सोसाइटी उसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर नहीं कर पाते हैं, तब तक क्या हम उस स्टिग्मा को, उस जो साइको रिस्पॉन्सेज हैं लोगों के या सोसाइटी के, उसको दूर करने में कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हमारे जितना भी अभी तक जो काम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, नो डाउट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये प्रॉब्लम ये होती है कि क्या हम जो 30 लोग इस समय यहाँ वेबिनार पे हैं, वी आर what role we are taking up in these campaign, और क्या हम कैटलिस्ट हैं इसमें जो इस मूवमेंट को साथ में रीजनरेट कर रहे हैं, क्या हम अवेयरनेस फैलाने तक के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम एक्चुअल जो है वो फील्ड में जो क्यूरेटिव एक्शंस हैं उनको लेके जा रहे हैं। हमें जरूरत ये होगी कि हम ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा यंग जनरेशन को जो है वो इसके साथ ला पाएं, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि जितना भी हम कैंपेन, जितनी अवेयरनेस, जितनी इंफॉर्मेशन इन डिजीजेस के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, उनके कॉजेज के बारे में देते हैं, उससे ज़्यादा एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया, डिफरेंट मीडिया नेटवर्क्स के द्वारा जो मार्केट फोर्सेस हैं, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, उनकी ज़्यादा डिमांड रेजिंग के लिए भी काम कर रहे हैं साथ के साथ। उन इफेक्ट्स को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें मुझे लगता है जितनी अभी डॉक्टर कटोच ने, उसके बाद अमरीन ने, उन्होंने भी बातचीत की है, हमें एक स्टडी की जरूरत है जिसमें ये जानने की जरूरत है कि जो यंग पॉपुलेशन है हमारे साथ, जो लगातार एक फिगर या जो डाटा है कि आपके पास लगातार जो यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और खासकर यंग जनरेशन में बढ़ रहे हैं। हम लगातार इंस्टीट्यूशंस में इंटरवीन करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स के द्वारा इंटरवीन करते हैं, हम लगातार ऐसे सेमिनार्स और बाकी के प्रोग्राम्स भी अरेंज करते हैं डिफरेंट मेयर्स के द्वारा, चाहे वो कोटपा हो, चाहे वो कितने भी अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ नॉर्म्स हों, उनके साथ इंटरवीन करते हैं। लेकिन ये सारे एफर्ट्स होने के बावजूद जो स्प्रेड है टोबैको यूज़ का, जो स्प्रेड है अल्कोहल यूज़ का, वो लगातार ऑन द इंक्रीज है। और ये भी मानने की बात है कि वो यंग जनरेशन जो है वो पहले से ज़्यादा भी कुछ सेगमेंट्स में इसकी तरफ बढ़ रही है। तो हमें ये समझ है कि खास करके जब हम यंग जनरेशन की तरफ बात करते हैं तो कौन सा सेगमेंट है यंग जनरेशन का जो कि लगातार ज़्यादा ल्यूक्रेटिव या ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ आ रहा है, यूज़ की तरफ बढ़ रहा है। नो डाउट उसमें आपके स्कूल ड्रॉप आउट्स हो सकते हैं, उसमें आपके प्राइमरी ड्रॉप आउट्स की बात तो अब मैं नहीं करूँगा, हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन स्टिल देयर आर ड्रॉप आउट्स। रूरल एरियाज में जैसे कि डॉक्टर गुरमीत ने भी टोबैको स्प्रेड की बात की थी कि वो रूरल एरियाज में ज़्यादा है। जो जितने हमारी यंग जनरेशन है जो ड्रॉप आउट्स हैं, उनके अंदर भी जो है वो टोबैको यूज़ ज़्यादा है अब तक। वो एक टारगेट हो सकते हैं ऐसी डिजीजेस के लिए इन फ्यूचर में भी। तो द फैक्ट इज़ कि हमें यंग पॉपुलेशन को लगातार अपने इन एफर्ट्स की ओर इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ये एंगेजमेंट जो है वो हम किस तरह से ले पाते हैं, क्योंकि जब हम एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं जिसमें कि एजुकेशनल सेटअप एक मेजर है, जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा आप अवेयरनेस कैंपेन्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, या इवन हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ जब हम जाते हैं, वहाँ पे यूथ एक फॉर्मल सेटअप में है। वहाँ पे जितनी भी हमारी इंटरवेंशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो नो डाउट एक सेंसिटाइजेशन प्रोसेस तक तो रहती है, लेकिन सोशल नेटवर्क पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे वो इफेक्टिवनेस जो इन इंटरवेंशंस की है वो शायद इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि वॉलंटरी जो यूथ की इन्वॉल्वमेंट है
वो ज़्यादा इफेक्टिव मेरे अनुभव के अनुसार रहती है। जब हम विलेज लेवल पे या किसी भी ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं यूथ यंग जनरेशन के साथ, और खास करके जो छोटे छोटे वॉलंटरी ग्रुप्स यूथ ने बना रखे हैं, यदि उनके साथ हम लगातार काम करते हैं, उनको लगातार इन कामों में इन्वॉल्व करते हैं, तब शायद हम ज़्यादा डीपली इनफेक्ट जो है वो इंटरवीन कर पाते हैं, और जो एक्चुअल बिहेवियरल चेंज है वो एक पीयर ग्रुप के माध्यम से आ पाती है। क्योंकि वो लोग जो कि विलेज सेटिंग में या कहीं किसी भी सेटिंग में, मोहल्ला सेटिंग में हो सकते हैं, अर्बन एरियाज में हो सकती हैं, कहीं पे भी वो जो पीयर ग्रुप्स हैं, उनके ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे वॉलंटियर इंटरवेंशन जो है वो हमें ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है वो आ सकती है। क्योंकि आप ये भी जानेंगे, बार बार मैं इस चीज़ को एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अल्टीमेटली जो कंजम्पशन पैटर्न है उसके बढ़ने में जो ओल्डर जनरेशन है वो शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि डिमांड या जो कंजम्पशन है वो वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एक एज ग्रुप के बाद बहुत सारी आदतें जो हैं वो आदमी अपनी पिछली कैरी करता है, ना कि नई गेन करता है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रही है, और यही जनरेशन है, इसमें बहुत बड़ा हमारे पास यंग के पास एजुकेटेड या बहुत सारा एक डेडिकेटेड लॉट भी है जो कि इन चीज़ों पे काम करने के लिए तैयार है। और मैं सिर्फ एक चीज़ पे से करूँगा कि नॉर्मली हम ड्रग एडिक्शन के बारे में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने कि डी एडिक्शन के माध्यम से या चीज़ों को छोड़ा है, जिन एज की आर्स की मैं बात कर रही थी, जो उस पर हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको छोड़ा है, और बहुत सारे ऐसे लोग अभी काम भी कर रहे हैं। आई वुड हैव बीन हैप्पी कि उनमें से एक दो लोगों को भी यदि हम इस फोरम पे भी बुला पाते। मंगल से मैं नेक्स्ट अनुरोध करूंगा अगली किसी भी मीट में हम ऐसे लोगों को जो कि एक रोल मॉडल हो सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे हिमाचल में ही रोल मॉडल्स हैं who are deep into the this drug business, और एक सेल्फ वो था उनका, डेडिकेशन थी, रिजॉल्व था, जिसके माध्यम से वो इससे उभर के आए। लगातार मेरे ख्याल में फेलियर्स के बावजूद भी, डी एडिक्शन सेंटर से वापस आने के बाद भी 5 to 7 years, एक डिकेड तक के एक जर्नी के बाद वो लोग जो है वो फिर से नॉर्मल हुए, और नॉर्मलाइज होने के बाद लगातार वो एक कमिटमेंट है उनकी जिस पे वो काम कर रहे हैं लगातार, तो उस पे हमें जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो जितनी हमारी यंग लेबर पॉपुलेशन है इस समय, यदि हम आई थिंक ऑल पीपल जो अब समय ज्वाइन किए हैं कुछ दूर के हैं, बाकी धर्मशाला के एडजॉइनिंग एरियाज के हैं, अगर आप इस छोटे से टाउनशिप के आसपास ही देखें तो जितने आपके पास लेबर है जो काम करती है, आई थिंक जिसमें से बहुत सारी जो टोबैको है, नॉन स्मोकिंग जितने टोबैको है उसके 100% यूजर्स हैं ये, और लगातार ये लोग सफरर भी हैं। तो यदि हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो किसी भी इसको हम इसमें यंग जनरेशन को, यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करके, और वी कैन बिगिन विद, ताकि एक हमारी सक्सेस स्टोरी या हमारे एक जो मॉडल रेप्लिका है वो बन पाए, और एक्चुअल में जो हम टारगेट्स जो कि इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे जो टारगेट्स बनते हैं, या चाहे वो टीवी इरेडिकेशन के हैं, चाहे और ज़्यादा टारगेट्स हैं, कोई भी 25 और 30, व्हाट वी कैन जस्ट बिगिन विद, और हम कोशिश कर सकते हैं यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करके एज ए रोल मॉडल कि हम इस पे काम करें। आई मस्ट कंग्रेचुलेट नाडा एंड नाडा टीम कि इस मौके पे उन्होंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, और मुझे ये मौका मिला कि इस मौके पे एक अलग से एक रूटीन में फिर से मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। थैंक्स एवरीबॉडी। So much on the session. Thank you for sharing your comprehensive details and knowledge that you have provided us. We are very fortunate to have you here. Thank you. Thank you, Monica. Now I would call Dr. Bhagyashree for concluding the session. Dr. Bhagyashree. Thank you, Monica. Hi everyone, I am Dr. Bhagyashree Kaushal और मैं नाडा यंग इंडिया नेटवर्क की मेंबर हूँ। और नाडा इंडिया के बारे में मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूँगी।
नाडा इंडिया कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स पर काम कर रहा है, हेल्थ एडवोकेसी, टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग कंट्रोल। और मैंने लास्ट ईयर नाडा ज्वाइन किया था और तब से हम मेजरली टोबैको कंट्रोल पर काम कर रहे हैं 3 स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। एंड वी हैव आवर वॉलंटियर्स एंड इंटर्न्स हु आर वर्किंग विद अस। और हम अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, कॉटपा एक्ट, कॉटपा अमेंडमेंट, टोबैको इंडस्ट्री, टोबैको टैक्सेशन, हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ टोबैको। और इस सब पे हम थ्रू वेबिनार्स, जैसे आज हमारा वेबिनार है, और फील्ड विजिट्स और यूथ फोरम्स जो कि फ्राइडे को होते हैं, ट्रेनिंग सेशंस, और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे वी आर एक्टिवली रनिंग आवर कैंपेन्स रिलेटेड टू टोबैको। और हम कॉटपा अमेंडमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमने हाल ही में लेटर्स भी लिखे थे प्राइम मिनिस्टर एंड हेल्थ मिनिस्टर को टू शो आवर सपोर्ट फॉर कॉटपा अमेंडमेंट। तो आज जैसे कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस और टोबैको के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारे और भी स्पीकर्स ने, डॉक्टर गुरमीत और डॉक्टर अमरीन ने शेयर किए हैं हमारे साथ कुछ फैक्ट्स मैं शेयर करना चाहूँगी कि WHO के अकॉर्डिंग 2.64 मिलियन केसेस होते हैं टोबैको के इंडिया में, एंड ये 2019 का डेटा है। और 38% से ज़्यादा डेथ्स होती हैं TB पेशेंट्स में टोबैको की वजह से। और अगर हम स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स देखते हैं तो 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा डेथ्स होती हैं स्मोकर्स में एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स जो TB पेशेंट्स हैं वो। और टोबैको जो यूसेज है वो TB पेशेंट्स में ज़्यादा हार्मफुल इसीलिए भी है क्योंकि जो टोबैको है वो ट्रीटमेंट जो एक हम प्रोवाइड करते हैं डॉट्स का, उसमें रेजिस्टेंस ले आता है, जिसकी वजह से जो मेडिसिन है वो असर नहीं कर पाती हैं और वो पर्सन की इम्यूनिटी को भी कम करता है। और रिलैप्स के केसेस जैसे आज सबने शेयर किया वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो टोबैको यूसेज है वो TB पेशेंट के लिए और ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। और जैसे डॉक्टर रिद्धिमा ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि जो केयर गिवर्स है उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें ही सब कुछ देखना है, और फिर वो प्रॉब्लम ज़्यादा भी बढ़ सकती है अगर जो आपका जो TB पेशेंट है वो अगर स्मोक करता है तो वो सेकेंड हैंड स्मोक से और लोगों में भी फैला सकता है। तो ये जो टोबैको का यूसेज है और TB का जो बर्डन है उसको कम करने के लिए, जैसे संजय शर्मा सर ने बोला कि हम यूथ को इन्वॉल्व करें और हर लेवल पर इन्वॉल्व करें, ग्रास रूट लेवल में और विलेजेस में और कम्युनिटी में जाकर अगर यूथ इन्वॉल्व होगा तो हम टोबैको पर और बेटर काम कर सकते हैं। और ऐसे ही आज जैसे हम टोबैको के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं टोबैको टैक्सेशन के बारे में भी बात करना चाहूँगी कि जो मोस्ट इफेक्टिव वे है हमारे लिए टोबैको का यूसेज कम करना, वो टोबैको टैक्सेशन को अगर इंक्रीज होगा तो वो बहुत ही इफेक्टिव वे है। क्योंकि अगर टोबैको पे टैक्सेस और प्राइजेस बढ़ते हैं तो उससे जो कंजम्पशन है और जो इनिशिएशन होता है एक अंडर एज लेवल पे या फिर किसी भी एज में जो एक इनिशिएशन होता है टोबैको का वो कम होगा अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और फिर कुछ वर्ग के लोग वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर प्राइसेस हमारे बढ़ते हैं। और ऐसे ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 18.9 मिलियन लाइफ सेव होंगी इंडिया में अगर टोबैको के टैक्सेस को हम इंक्रीज करते हैं। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा और गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। तो मैं आप सबसे कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगी कि अगर हम टोबैको टैक्सेशन को इंक्रीज करते हैं देन इट विल ब्रिंग इन सम चेंज, और वो टोबैको का यूसेज कम करेगा और जो TB बर्डन है, ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है, उसको भी कम करेगा। थैंक यू। Thank you, Dr. Bhagyashree, for the conclusion and all the facts that you stated. Now, lastly, I would call Ms. Shubhika to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. Thank you so much to all the participants who have joined us today for this webinar on raising awareness in the theme related to increasing tobacco taxes to end tuberculosis. I think we've discussed a lot of important points on the reason behind why tuberculosis is so important. We've cited so many facts on how young children are suffering from tuberculosis, not just from smoking, but mainly from passive smoking, and discussed a lot of points regarding how we can overcome this and why increasing taxes could reduce affordability among youth.
So to begin with, I would really like to thank Dr. Gurmeet Katoch for joining us today and for sharing his valuable points, along with Dr. Amreen. Dr. Amreen, thank you, ma'am, for joining us today and for sharing your points, and also Shri Sanjay Sharma. I think all of your viewpoints and opinions on raising awareness and why controlling tobacco consumption is very important for reducing the prevalence of tuberculosis in India is very, very impactful and also eye-opening. So thank you so much for joining us today. I would also like to thank the whole NADA team for organizing this wonderful webinar and for all the team efforts that you have put into this. Thank you to all the participants who have joined us today, and especially to Deepshika ji for organizing this webinar very well and smoothly, along with Mangal ji as well. So thank you everyone for joining us today. Thank you, Dr. Shubhika, sorry. Yeah, so before winding up the session, I would also like to thank our speaker, Dr. Gurmeet, Dr. Amreen, and Shri Sanjay Sharma ji, our respected chairperson and coordinators, for the contribution in making today's session glorious. And thanks to everyone who have joined the session. Have a great evening. Thank you all. Wait for a minute. एक पिक्चर लेते, ग्रुप पिक्चर. So please आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. And अक्षय जी एक ग्रुप पिक्चर ले लीजिए. Is everyone's cameras on? No one's coming on the screen. Mangal ji. Yes. मैं किसी को अभी देख नहीं पा रहा हूँ. तो is actually everyone's camera on और या मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ? I've taken the Wait a pictures. minute. Okay, you Okay, have okay. Thank Yeah. you, Bhagyashri. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Okay. Yeah. So thank you very much, you so much, everyone. team. It was great to have you here. And अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखेगा हमारे टोबैको फ्री इंडिया इनिशिएटिव के साथ. And जल्द ही हमारी तीनों states would be tobacco free. If not today, maybe tomorrow or maybe day after tomorrow. But we will win. That is our motivation, and you all keep our motivation. Get set, ready to go. ठीक है? Thank you so much, everyone. Thank you so much.